अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपकी खिदमत में एक और नए प्रॉब्लम के साथ मेरे बेटे हाजिर हूँ। दिस इज 24th क्वेश्चन ऑफ इरोडो। द प्रॉब्लम अगेन कम्स फ्रॉम किनेमेटिक्स बट इट्स अ केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। अभी तक हम पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी देख रहे थे वो स्ट्रेट लाइन था। इस क्वेश्चन में यू विल कम टू नो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स कर्वलिनियर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके मेरा बच्चा, अब बताइए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक रेडियस वेक्टर है पॉइंट ए का रिलेटिव टू ओरिजिन। ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया है बेटे। ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स आई कैप एंड जे कैप, दे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। मुझे क्या क्या चीज इसमें निकालनी है? पहले मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उसके बाद मुझे उसको प्लॉट करना है। ओके, मुझे टाइम डिपेंडेंस निकालनी है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। डार्क इंक से लिखा है, बार बार मैंने बोला जब भी इरोडो में वेक्टर लिखा होता है डार्क इंक से लिखा होगा। वी फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन डब्ल्यू फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे टाइम डिपेंडेंस बोलना है एंगल अल्फा का जो होगा दो वेक्टर्स के बीच में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, और मुझे मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इट्स अ सेट ऑफ इक्वेशन, थोड़ा सा लेंथी है बिकॉज 2-4 चीज इसने पूछी है। हमारे पास जो आर वेक्टर है, पार्टिकल का जो पोजिशन वेक्टर है, वो हमारे पास है ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप। दिस इज अवर पोजिशन वेक्टर एंड इफ यू कैन जज फ्रॉम द इक्वेशन बोथ आर फंक्शन ऑफ टाइम। इट हैज 2 कंपोनेंट्स, one is x component and one is y component. They are both functions of time. Okay, मैं इक्वेशन को देख के ही प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होने वाली है, बिकॉज क्लास में मैंने आपको बहुत बार बताया बेटे, बिकॉज आर जो है इट्स क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम, it's a linear function of time. Okay, let's try to deep dive into it. देखिए बेटे, ये इसमें हमारे पास पोजीशन वेक्टर में 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। एक पहला कोऑर्डिनेट जो होगा वो x होगा, वो होगा 80, आई विल कॉल दिस फर्स्ट, और जो y कोऑर्डिनेट होगा मेरे बेटे वो होगा माइनस बी टी स्क्वायर। ओके मेरा बच्चा, ठीक है। अगर आप देखोगे इन 2 इक्वेशन से, आई हैव टू एलिमिनेट टाइम बिकॉज ट्रैजेक्टरी इज एन इक्वेशन ऑफ पाथ, तो उसमें टाइम हम एलिमिनेट करेंगे। हाउ? आई विल यूज फर्स्ट इन सेकेंड माइनस बी t, I can write x by a whole square. So what should my answer be? Y is minus bx square by a square. मेरा बच्चा, this is your third equation and this is equation of trajectory. Equation of trajectory. And if you'll ask me to plot this, if you want me to plot this one, अगर मेरे बेटे मैं इसको प्लॉट करना चाहूं, I think it would be like this. अगर आप यहां पर देखोगे बेटे, y जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर बट इट्स फंक्शन ऑफ माइनस x स्क्वायर। अगर y होता ना बेटे proportional to x square, it would have been upward parabola with increasing slope in the positive direction, but it is y is minus x square, so y is proportional to minus x square, so it will be parabola at x is equal to 0, y will be 0, here will be y, here will be x, y is a function of x. This will be parabola like this, downward parabola, because when value of x will increase, value of y will increase the negative way, because y is proportional to minus x square. First part is done. Okay, what is our part B? Time dependence of velocity and acceleration vector. So if I will differentiate x, I will get velocity along x. If I will differentiate y, I will obviously get velocity along y. So velocity along x will be vector dx by dt, it will be ai cap, and velocity along y, it will be derivative of y coordinate, it will be minus b constant 2t j cap. Okay, so my velocity vector will be ai cap minus 2bt j cap. Obviously you can check it in this trajectory. If I want to have velocity at any point of time, suppose I have to draw tangent to this trajectory, that will give me the direction of velocity at any time t, and this velocity, mind it, will have 2 components. One will be along I cap and one will be along minus j.
That's what my answer is. अगर मैं बेटे इसका मॉड्यूलस निकालना चाहूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, व्हाट आई विल गेट, I and minus j, they are perpendicular to each other. It will be a square plus 4b square t square. Call this equation 4th like this, and I will call this equation 5. I hope मेरे बेटे आपको तोते नहीं उड़े. सिंपल फिजिक्स की मैं यूज कर रहा हूं. मैंने पोजीशन वेक्टर लिया, उससे मैंने टाइम को एलिमिनेट किया, ट्रैजेक्टरी आया, फिर एक्स कोऑर्डिनेट को अलग डिफरेंशिएट किया, वाई कोऑर्डिनेट को अलग डिफरेंशिएट किया, I obtained the velocities. Now, what is our acceleration? That is that I represent by A, but as per Irodov, I will represent it by W. Differentiate velocity with respect to time. So if you want to differentiate this x, it will be 0I because it's a constant. If you want to differentiate y, it will be minus 2b j cap. So the acceleration vector will be minus b j cap. And by the way, it's not a function of time. It is a constant. Acceleration is constant. If you want modulus of this acceleration, if you want mod of w, that will be 2b. This is the second part. Velocity भी हो गया मेरा बेटा, और हमारा acceleration भी हो गया. Call this 6th equation. Now मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है, ठीक है? And you know कितनी बार मैंने क्लास में आपको बोला, if you want to calculate angle between two vectors, use the concept of dot product. So अगर मेरा बेटा मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करूं तो लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन velocity and acceleration vector. So cos alpha will be equal to dot product of velocity and acceleration divided by modulus of velocity and modulus of acceleration. Because I know a dot b is mod of a, mod of b, cos theta or cos alpha. Oh here, cos alpha कितना निकलेगा मेरा बच्चा? What is velocity vector in terms of vector form? मुझे बताइए. It's ai minus 2btj. ai minus 2btj cap. I have to dot it with acceleration is minus 2bj cap divided by modulus of this. It is root of a square plus 4b square t square multiplied by modulus of this. It will be 2b. So what should be my cos alpha? I dot I will be 0. This will go. It will be 4b square t divided by square root of this. It will be how much? Come on. It will be root of a square plus 4 square b square t square, and I will take this inside. This will become 4b square. Because this factor has been taken inside into the root, it will become 4b square. So if you want to do multiplication of this, it will be 4b square t and divided by square root of, it will be 4a square b square plus 16 b raised power 4 t square. Okay, this is my cos alpha. This is my cos alpha. Okay, now if you want me to find this alpha more precisely, cos alpha is based by hypotenuse. Base मेरा बेटा यहाँ होगा 4b square t, hypotenuse होगा root of 4a square b square plus 16 b raised power 4 t square. What will be this much? It will be square of this minus square of this. Perpendicular कितना होगा? Root of this square, ये बनेगा 4a square b square plus 16 b raised power 4 t square. इसमें से माइनस करूंगा मेरा बच्चा ये वाला. It will be how much? It will be 16 b raised power 4 t square. This will be this x. Suppose इस साइड को मैं perpendicular का x रखूंगा. It will be x square will be equal to this much square minus this square. x बनेगा फिर इसका रूट, इसका स्क्वायर दिस मच, इसका स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा मेरा बेटा. तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2ab. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2ab. What should be my tan alpha? What should be my tan alpha? It will be perpendicular x divided by base. Base is 4b square t.
what should be my x value? It's 2ab divided by 4b squared t. This bb goes, 2 goes, tan alpha is equal to a divided by 2bt. This is fantastic equation. इसको मेरा बेटा हम कौन सी इक्वेशन रखेंगे? This I will call 7th equation. Alpha भी हमने बेटा कैलकुलेट किया. Now we are left with d part, that is modulus of average velocity, and we know v average will be equal to total distance divided by total time. This v average, but over here in the question I have been asked to calculate mean velocity vector. So यहाँ पर ये था total distance by total time. अगर मुझे average velocity का mean निकालना पड़ा, total displacement by total time. So it's very easy. Total displacement मैं r का modulus लूंगा, time तो मेरा t है ही. So how much that will be? Come on, magnitude of average velocity, total displacement will be square root of at का square plus how much? I think it was bt. The question, yeah, bt square. at का square और इसका square, because I और minus j they are perpendicular to each other. bt का square, bt square का whole square. It will be root of a square t square plus b square t raised to power 4 whole divided by what's time t whole divided by t, and you take square t inside the square root, will become a square t square plus b square t raised to power 4 divided by t square. Your average velocity will be, कितना आसान था बेटे, it will be square root of a square plus b square t square. This is my answer. This is our average velocity. हमने ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकाला, उसका प्लॉट डाला, वेलोसिटीज इंडिविजुअली निकाले, एक्सेलरेशंस निकाले, एवरेज वेलोसिटी का मीन निकाला, मॉड्यूलस उसका मीन का मॉड्यूलस लिया, और हमने एंगल निकाला between velocity and acceleration in terms of tan. You can even use cos, no problem. Thank you, buddy.